this. But it is up high. Yes, sir. Now, must. Otherwise, This is indeed a privilege for me to present this brief overview of the Indus River Bank Eco-Restoration Initiative, which we have just launched here today by the Honorable Lieutenant Governor. So, as you are aware, the Indus River system is truly the lifeline of Ladakh, ecologically, culturally, and economically. However, over the years, its banks have become increasingly fragile. The challenges are quite evident. We are dealing with a sparse natural vegetation, weak soil mining, and high wind velocities that accelerate erosion and sand deposition, which you have just seen how sand is flying around us. These natural constraints are further compounded by the anthropogenic pressures, including infrastructure expansion and growing tourism activity, as we have been witnessing in the landscape. In a region that receives less than 100 millimeters of annual precipitation, natural regeneration is extremely limited, as we see around again. As a result, we are witnessing a gradual but definite degradation of riverbank stability along several stretches of Indus. In this context, that the present initiative has been conceptualized. The objective is not merely to take plantation activities, but to move towards ecological restoration as a sustained process. Our aim is to rebuild functional and self-sustaining river systems that can stabilize soil, support vegetation, and enhance the resilience of the riverine landscapes in this cold desert environment. We are gathered here today to celebrate the International Day of Forest, which was on 21st of this month, and yesterday was World Water Day. In Ladakh, these two are inseparable. It might appear that forests and economies are separate domains, but in Ladakh, they are deeply intertwined.
Today's initiative has been conceptualized by Honorable Lieutenant Governor, who has been a lifelong advocate of conservation and afforestation. I had the privilege of witnessing firsthand when I was working with him in Delhi, and it is no surprise to me that this plantation drive has been started in just about 2 weeks' time of his assuming office. And with your permission, sir, I will share with the House that today is another special day because it is his birthday. So we are planting 1,000 saplings, also praying for his long life. Ladakh has less than 1% recorded forest cover, yet they perform disproportionately large ecological functions. They stabilize fragile slopes, reduce wind erosion, conserve scarce soil moisture, and regulate microclimates. Let us accept that climate change is real and its impact is felt most closely in places like Ladakh, where we are now witnessing shifting weather patterns and receding glaciers. Local residents, sir, report that this year the winter has been much milder and the snowfall much less. This is bound to have an impact on livelihoods and the agrarian economy. Nature-based solutions like eco-restoration, afforestation at a landscape level can contribute to up to 1/3 of global climate mitigation potential. In a climate-sensitive region like Ladakh, afforestation is not an option, it is essential. We must begin to see forests not merely as environmental asset but also economic infrastructure. For instance, sea buckthorn-based livelihoods alone hold the potential to generate significant economic opportunities in Ladakh's rural economy. Carefully planned hortiforestry plantations such as apricot and cherry can enhance farmer incomes while stabilizing landscapes. Needless to mention, forests also underpin ecotourism, which is a rapidly growing sector in Ladakh. Ladakh, with its unique ecological and cultural landscape, can position itself at the forefront of high-altitude green economies. In this context, the Indus River Green Corridor initiative being launched today is both timely and visionary. Jule Namaskar. It's an honor to address this distinguished gathering on such a meaningful occasion. I congratulate the Department of Forest, Ecology and Environment, Spituk Gonpa, and the University of Ladakh for organizing this celebration and for launching the Indus River Green Corridor Eco Restoration Plantation here at Spituk Pharka. This is a commendable initiative, and I am glad to be part of it today. This year, the International Day of Forests is being observed under the theme Forests and Economies. This theme carries a very clear and important message for a union territory like Ladakh. Forests are not separate from our economic life, they are the foundation of it. When we speak of economy, in Ladakh, we speak of agriculture, animal husbandry, tourism, and the daily livelihood of thousands of families across both our districts, Leh and Kargil. Every one of these livelihoods depends directly or indirectly on a healthy environment. If our forests disappear, our soil erodes. If our soil erodes, our fields fail. If our fields fail, our people suffer. The change is simple and it's real. Ladakh is a cold desert at high altitude. Our ecology is fragile and our geoclimatic conditions are among the most extreme in the country. We receive very little rainfall. Our growing season is short. In such conditions, every tree, every patch of green cover, every shrub along a river bank is doing important work. It is holding the soil together, absorbing water into the ground, protecting farmland, and keeping the local environment liable. When we plant trees and store green cover, we are not doing something symbolic. We are doing something that directly and practically protects the lives and livelihood of our people. Today, plantation drive at Spituk Pharka, the highway plantation with apricot and cherry blossom species, and the floriculture drive along our corridors are all meaningful steps
in this direction. Apricot is particular holds deep cultural and economic significance for the people of both Leh and Kargil. Planting it along our highway is both an ecological and an economic act. Was released on 21st March at Choklapsar City Forest in collaboration with Post Office Department. Commendable service and significant contribution to the department. I would like to invite Felix on stage. Congratulations. Now I would like to invite Sri Namgyal Tashi Sir, Range Officer Leh, who has served the Forest Department for 26 years of service with sincere. Now I would like to invite the winners of Hackathon, which was celebrated on 19 March 2026, jointly organized by the Department of Forest Ecology and Environment, Leh-Ladakh, and the University of Ladakh Leh, focusing on the theme Forest and Economics. The winners are: third prize, Padma Churol, University of Ladakh. Padma Churol. Siring Ambo, University of Science and Tech. First prize, Siring Ambo. इंडस रिवर ग्रीन कॉरिडोर इको रेस्टोरेशन की शुरुआत हो रही है। ये एक ऐतिहासिक अवसर है जब इस ठंडे रेगिस्तान में मल्टीपल एजेंसीज, डिफेंस फोर्सेस, लोकल कम्युनिटी और स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में प्लांटेशन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद और बधाई देता हूँ। हमारा ये कदम आने वाले समय में न सिर्फ हमारे लेह शहर की खूबसूरती को बढ़ाएगा, बल्कि यहाँ के इकोलॉजिकल चैलेंजेस में निपटने में भी मदद करेगा। दोस्तों, आज हम एक ऐतिहासिक सिंधु नदी के किनारे पर एकत्रित हुए हैं। ये ऐसी नदी जिसने सभ्यताओं को जन्म दिया और उन्हें आगे बढ़ाया है और सदियों से इस ऊंचे रेगिस्तान में जीवन को बनाए रखा है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम आज न सिर्फ जंगलों और नदियों के बारे में सोचें, बल्कि प्रकृति, विकास और सभ्यता के बीच गहरे रिश्ते के बारे में भी सोचें। लद्दाख जैसे इलाकों में जंगल और नदी सिर्फ इकोलॉजिकल एसेट्स नहीं है, ये यहाँ की स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी का भी जरिया है। कई रिसर्च भी इस बात को साबित करते हैं कि प्रकृति पर आधारित उपायों से दुनिया भर में पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं का सबसे स्थायी समाधान निकाला जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के साथ साथ देश भर में तेजी से बढ़ रहे लैंड डिग्रेडेशन और डिजर्टिफिकेशन को रोकने का अभियान चलाया है। प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर डिग्रेडेड लैंड को फिर से हरा भरा और उपयोगी बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें लद्दाख एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। आज इस कार्यक्रम में इतने लोगों की भागीदारी और आप सबका उत्साह देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि लद्दाख के पास इन स्ट्रेटेजिक आइडियाज को जमीन पर उतारने का पूरा अवसर है। दोस्तों, इस वृक्षारोपण अभियान की सफलता में यहाँ के स्थानीय समुदाय की भागीदारी का अहम योगदान है। मुझे बताया गया है कि स्पितुक गोंपा एसोसिएशन ने इस प्लांटेशन के लिए करीब 1 हेक्टेयर जमीन दी है, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। स्थानीय समुदायों और सरकार के पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों के बीच इस तरह का सहयोग अत्यंत सराहनीय है। इससे न सिर्फ समुदाय के लोगों में ओनरशिप की भावना जागती है, बल्कि ये हमारे प्रयासों को सफल बनाने में और गारंटी देता है।
स्थानीय लोगों की भागीदारी और सहयोग से ऐसा ही एक सफल प्रयास मैंने 2021 में राजस्थान के उदयपुर में किया था, जहां 25 एकड़ एक बंजर जमीन में सिर्फ 3 वर्षों में एक बांस के हरे भरे जंगल को तब्दील में ला दिया था। मेरी इच्छा है कि मैं उस वीडियो को आप लोगों को भेजूंगा और ये इस बात को दर्शाता है कि अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। वो भी इसी तरीके का बंजर था जो आज 3 साल के अंदर इतना हरा भरा हो गया है कि जहां अगर आप देखेंगे तो शायद उसको पहचान नहीं सकते कि कभी ये जंगल हुआ करता था। मैं हमेशा नए प्रयोग करने में विश्वास करता हूँ। पहले भी मैंने दिल्ली और अन्य जगहों पर बहुत सारे प्रयोग किए हैं जहाँ पर मैंने बांस, चंदन, चिनार, चेरी ब्लॉसम, अमरूद, अंगूर, ग्रीन एप्पल, वाटर एप्पल जैसे प्लांट्स लगाए, जिनके रिजल्ट्स काफ़ी पॉजिटिव भी रहे हैं। मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि जब भी मैंने इन नए प्रयोगों को किया तो उस वक्त बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट ने इस बात को कहा कि शायद ये संभव नहीं है। चंदन के मैंने 10,000 पेड़ दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूट किए थे, उसमें 9,000 पेड़ आज जो है करीब से 10 से 15 फीट के हो गए। लगभग 3 लाख बांसों के पेड़ों को वहां पर लगाया गया। उसका एक पर्पस था, वो ये था कि बांस का पेड़ और पेड़ों के कंपैरिजन में लगभग 33% ऑक्सीजन ज्यादा ट्रांसमिट करता है, जो दिल्ली के लिए बहुत जरूरी था। तो इस तरीके के प्रयोग मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ भी करूँगा और प्रयोग जब भी किए जाते हैं उसमें सफलता हमेशा हासिल होती है। इसी कलेक्टिव ओनरशिप की भावना से हम इंडस रिवर ग्रीन कॉरिडोर इनिशिएटिव की शुरुआत कर रहे हैं। मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि यह सिर्फ एक सरकारी प्रोग्राम नहीं है, यह कई मायनों में सिविलाइजेशन प्रोजेक्ट है। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य सिंधु नदी के किनारों की इकोलॉजी इंटीग्रिटी को रेस्टोर करने के साथ साथ इस ठंडे रेगिस्तान में ग्रीन बफर्स बनाना है और डेवलपमेंट और इकोलॉजी को जो कोएग्जिस्टिंग का एक लॉन्ग टर्म मॉडल भी बनाना है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लांटेशन और इको रेस्टोरेशन के ऐसे कार्यक्रम आगे भी होते रहेंगे। प्लीज यूटी लद्दाख लेफ्टिनेंट जनरल हितेश बल्ला GOC 14 कोर्स, श्री राजेश S एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एंड चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन यूटी लद्दाख, मेजर जनरल प्रवीण छाबरा GOC सब एरिया, डॉक्टर सबरवाल IG ITBP, मैडम Spalzes Ammo प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, administrative secretaries of UT administration, Deputy Commissioner Leh, officers from police, defense, ITBP, GRIF and district administration, distinguished dignitaries, esteemed guests, revered members of Spituk Gonpa, religious, political and religious heads, students, media personnel and dear participants. On behalf of Department of Forest, Ecology and Environment, it's my privilege and honor to extend our heartfelt gratitude to each one of you for gracing this occasion, the International Day of Forest 2026 and the inauguration of Indus River Green Corridor Initiative. We are deeply indebted to our Honorable Lieutenant Governor Shri Vinai Kumar Saxena, whose visionary leadership and commitment to ecological preservation inspired us to strive harder in safeguarding Ladakh's fragile environment. Your presence today has added immense value to this celebration. Your insight have inspired each one of us to think beyond this program and commit ourselves to practical action that will ensure preservation of our forest resources. Our gratitude extends to the distinguished dignitaries, officers, officials and guests who have joined us. Your encouragement strengthens our collective resolve to nurture forests, rivers and लैंडस्केप फॉर जनरेशंस टू कम। लद्दाख की जनता को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज
एक बहुत सी शुरुआत हुई है लेह में। जो प्लांटेशन ड्राइव शुरू हुई है, इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आज लेह सिटी के अंदर भी प्लांटेशन हो रहा है और यहाँ हम लोगों ने इंडस के साथ भी प्लांटेशन किया है। और इस प्लांटेशन की जो सबसे बड़ी खासियत हो ये है कि सबका सहयोग में मिला है, चाहे रिलीजियस लीडर्स हों, आर्मी हो, आईटीबीपी हो, सिविल अथॉरिटीज़ हों, प्लस आम जनता हो, स्टूडेंट्स हो। जब कभी भी कोई ऐसा प्रोग्राम लॉन्च होता है जिसमें सबका पार्टिसिपेशन होता है, वो सफलता ज़रूर से मिलती है। मैं लेह लद्दाख की जनता को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हम इस तरीके के प्रोग्राम और करेंगे जिससे कि यहाँ पर ग्रीनरी को बढ़ाया जा सके, ग्रीन कवर को बढ़ाया जा सके। जो भी लेस देन 1% ग्रीन कवर है उसको 5% तक कैसे लाया जाए, इसकी पूरी प्लानिंग करेंगे और लेह सिटी को भी बहुत खूबसूरत बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।